विश्व को आर्य बनावे, सकल विश्व को आर्य बनावे। हे प्रभु हम तुमसे वर पावे, हे प्रभु हम तुमसे वर पावे, हे प्रभु हम तुमसे वर पावे, हे प्रभु हम तुमसे। हे प्रभु हम तुमसे वर पावे, हे प्रभु हम तुमसे वर पावे। सकल विश्व को आर्य बनावे, सकल विश्व को आर्य बनावे। हे प्रभु हम तुमसे वर पावे, हे प्रभु हम तुमसे वर पावे। वैर विघ्न को दूर भगावे, वैर विघ्न को दूर भगावे। प्रीति रीति की नीति चलावे, प्रीति रीत की नीति चलावे। हे प्रभु हम तुमसे वर पावे, हे प्रभु हम तुमसे वर पावे। फैले सुख संपत्ति फैलावे, फैले सुख संपत्ति फैलावे। आप बढ़े तब सबको सादर नमस्ते जी। On behalf of Arya Sabha America, it's my distinct pleasure and welcome you all to this Saturday morning Agnihotra and Vedic Satsang services hosted by Sabha. Today, our guest Acharya ji, Acharya Varun Dev ji, is joining us from Kenya, Africa. He will be leading us in this morning's prayers and, of course, the pravachan. So it is my distinct pleasure to welcome back Acharya Varun Dev ji. धन्यवाद आचार्य जी। आचार्य जी आप शायद म्यूट पे हैं। ओके, जी सभी को सादर प्रणाम। आइए हम सभी मिलकर आज का ये सुंदर यज्ञ अपना सत्संग आरंभ करेंगे। अपने चित्त को निर्मल कर, अपने मन को शांत कर, सभी बाहर के विषयों से मन को हटाकर अपने मन को उस परमेश्वर पर एकाग्र कर हम 3 बार ओम की पवित्र ध्वनि का उच्चारण करेंगे। लंबा गहरा श्वास लीजिए। टेक डीप ब्रेथ। ओ
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालने कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी बुद्धि को श्रेय मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए हम सभी मिलकर ईश्वर का ध्यान संध्या के रूप में, ब्रह्म यज्ञ के रूप में करेंगे। संध्या अर्थात सम्यक रूप से किया हुआ ध्यान। ईश्वर ही हमारे संपूर्ण ब्रह्म यज्ञ का केंद्र हैं और ईश्वर के साथ we will try to establish living contact with the Parameshwar, who is the source of all life and delight and power and peace. अथ ब्रह्म यज्ञः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। ॐ वाक् वाक्, ॐ प्राणः प्राणः, ॐ चक्षुः चक्षुः, ॐ श्रोत्रं श्रोत्रम्, ॐ नाभिः, ॐ हृदयम्, ॐ कण्ठः, ॐ शिरः,
ॐ बाहुभ्यां यशोबलम् ॐ करतलकरपृष्ठे ॐ भुः पुनातु शिरसि ॐ भुवः पुनातु नेत्रयोः ॐ स्वः पुनातु कण्ठे ॐ महः पुनातु हृदये ॐ जनः पुनातु नाभ्याम् ॐ तपः पुनातु पादयोः ॐ सत्यं पुनातु पुनः शिरसि ॐ खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र ॐ भुः ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम् ॐ ऋतं च सत्यं चाभिधात् तपसोऽध्यजायत ततो रात्रजायत ततः समुद्रो अर्णवः ॐ समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य मिषतो वशी ॐ सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः ॐ शन्नो देवीरभीष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः ॐ प्राचीदिगग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्या इषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वोजम्भे दद्मः ॐ दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतिस्थिरश्चिराजि रक्षिता पितर इषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वोजम्भे दद्मः ॐ प्रतीचीतिग्वरुणोऽधिपतिः प्रीदाकुरक्षिता अन्नमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वोजम्भे दद्मः ॐ उदीचीदिक्सोमोऽधिपतिः स्वजो रक्षिता शनिरिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वोजम्भे दद्मः ॐ ध्रुवादिक्विष्णुरधिपतिः कल्माषग्रीवो रक्षिता विरुध इषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वोजम्भे दद्मः ॐ ऊर्ध्वादिक् बृहस्पतिरधिपतिः
पित्रो रक्षिता वर्षमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दद्मः ॐ उद्वयं तमसस्परिस्वः पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रा सूर्यमगन्मज्योतिरुत्तमम् ॐ उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम् ॐ चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्निः आप्राद्या वा पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्थस्तुषश्च स्वाहा ॐ तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपया अनेन जपोपासनादिकर्मणा धर्म अर्थ काम मोक्षाणां सद्यः सिद्धिर्भवेन्नः ॐ नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः. Now we will chant ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्राः. अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्राः. ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव. ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम. ॐ य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम. ॐ यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम. ॐ येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वहस्तभितं येन नाकः
यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ प्रजापते नत्वदेतान्यो विश्वा जातानि परिता बभूव। यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयीणाम्। ॐ स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा। यत्र देवा अमृतमानशानात् तृतीये धामन्नध्यैरयन्त। ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान्। यूयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। इति ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्राः। 2 मिनट के लिए अपने नेत्रों को बंधी रखेंगे और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। हे सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, हे परमपिता परमेश्वर, आज इस प्रातः काल की शुभ वेला में हम आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। अपने हृदयों में पवित्र भावनाएं लेकर हमारे मन को शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, उसमें अपने दिव्य ज्ञान की ज्योति को प्रतिष्ठित कीजिए। हमारे हृदयों में अपने भक्ति को, अपने प्रति अहेतुकी भक्ति को स्थापित कीजिए। हमारे प्राणों को शुद्ध कर, निर्मल कर, उसमें अपनी दिव्य शक्ति का संचार कीजिए। हमारे शरीरों में सभी रोग शोक दूर कर अपनी आरोग्य शक्ति को स्थापित कीजिए। हे परमेश्वर, हमें शुभ कर्मों के, श्रेष्ठ कर्मों के योग्य बनाएं, श्रेष्ठ ज्ञान के योग्य बनाएं एवं हमें सत्कर्मों में प्रेरित करें। संपूर्ण विश्व में शांति एवं सामंजस्य स्थापित करें। यही आपसे प्रार्थना है, हमारी प्रार्थना स्वीकार करें। Now we will take 3 mantras from Swasti Vachanam and Shanti Karanam. First, from first to third mantra of each. Atha Swasti Vachanam, from the first one to the third one. Om Agnimile Purohitam Yajjasya Devamritwijam Hotaram Ratnadhatamam Om Sanah Piteva Sunave Agne Supayano Bhava Sachasvanah Swastaye Om Swasti no Mimitamashvina Bhagah Swasti Devaditir Narvanaha Swasti Pusha Asuro Dadhatunah Swasti Dyava Prithavi Suchetuna. 3 mantras from Shanti Karanam. Atha Shanti Karanam. Om Shanna Indragni Bhavatamavobhi Shanna Indra Varuna Rata Havya Shamindra Soma Suvitaya Shanyoho Shanna Indra Pushana Vajasatau Om Shanno Bhagah Shamunah Shanso Astu Shannah Purandhi Shamusanturayah Shannah Satyasya Suyamasya Shansah Shanno Aryama Purujato Astu Om Shanno Dhata Shamudhartano Astu Shanna Uruchi Bhavatu Svedabhihi Shamrodasi Brihati Shanno Adrihi Shanno Devanam Suhavani Santu.
नाउ ऋग्वेद वर्ण करेंगे संकल्प पाठ. प्लीज टेक फ्यू ड्रॉप्स, जो यजमान है, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द palm ऑफ योर राइट हैंड एंड वी विल डू संकल्प, शुभ संकल्प, शिव संकल्प to complete this whole havan in a concentrated and a goodwill way. अथ संकल्प पाठः. ओम तत्सत् श्री ब्रह्मणो दिवसे द्वितीये पहरार्धे वैवस्वते मनवन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे एकवृन्द षण्णवतिकोटि अष्टलक्ष त्रिपञ्चाशत्सहस्र चतुर्विंशत्युत्तरशततमे षष्टि संवत्सरे अशीत्यधिक द्विसहस्रविक्रमाब्दे दक्षिणायने शरदऋतौ भाद्रपदमासे शुक्लपक्षे द्वितीयायां तिथौ शनिवासरे शुभमुहूर्ते अमेरिकाद्वीपे संयुक्तराष्ट्र अमेरिकादेशे सर्वकल्याणार्थम् ईश्वरप्रीत्यर्थम् अस्नाभिरत्र देवयज्ञः क्रियते. छोड़ देंगे जल को नीचे. तीन बार 3 times आचमन करेंगे. प्लीज टेक few drops of water on the palm of your right hand and after the mantra kindly sip the water 3 times in order to purify our whole body and senses. Om amritopastarnamase swaha. Kindly drink. Second time. Om amritapidhanamase swaha. Third time. Om satyam yashah shrirmai shri shayatam swaha. Take few more drops and just please wash your hands behind. Now Angisparsh mantra. Take few drops on the palm of your left hand and with the help of middle and ring finger of your right hand, from right to left side of the body, different body parts will be touched in order to make them purified and strengthened. Om Vangma Ase Astu. Om Nasorme Prano Astu. Om Akshanorme Chakshurastu. Om Karnayorme Shrotram-astu. ओम बाहोर्मे बलमस्तु. ओम उर्वोर्म ओजो अस्तु. ओम अरिष्टानि मे अंगानि तनुस्तन्वामि सह सन्तु. Now please kindly light your deepak. Om bhurbhuvah swaha. And now the people who are sitting with Havan Kund, they will establish fire in the Havan Kund. Om bhurbhuvah swardyauriva bhumna prithvi varimna tasyaste prithvi devayajani पृष्ठे अग्नि मन्नाद मन्नाद्यायादधे. Kindly establish fire in your हवन कुंड. अग्नि को प्रतिष्ठित कर देंगे. अग्न्याधान. ओम उद्बुद्ध स्वाग्ने प्रतिजाग्रही त्वमिष्ठा पूर्ते संसृजे थामयञ्च अस्मिन् सदस्ते अध्युत्तरस्मिन् विश्वे देवायजमानस्य सीदत. Kindly take 3 samidhas, wood sticks and dip them into the ghee
and please offer with swaha each samidha. Om ayanta idma atma jata vedaste nedhyasva vardhasva cheddavardhaya चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ समिधाग्निं दुवस्यत घृतैर्वोर्धयता तिथिम् आस्मिन् हव्याजुहोतन ॐ सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोछाय विष्ठय स्वाहा इदमग्नये अंगिरसे इदन्न मम 5 घी की आहुति देंगे स्वाहा के साथ। ओम आयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेने ध्यस्व वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ओम आयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेने ध्यस्व वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेने ध्यस्व वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेने ध्यस्व वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेने ध्यस्व वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। Now we will do sprinkling of water, jal sinchan, first in the east. Om adite anumanyasva, in the west. Om anumate anumanyasva, Om saraswatya anumanyasva. Now in the south, after the mantra from the south and all around Havan Kund. Om Deva Savitah Prasuva Yajjam Prasuva Yajjapatim Bhagaya Divyo Gandharvaha Ketapuh Ketannaha Punatu Vachaspatirva Channaha Swadatu. Now Aghara Vajya Bhagahuti, 4 oblations of ghee in the line. First on your left side in north, second on your right side south, and 2 in the center. Left, right, center, north, south, madhya mein, center. Om agnaye swaha idam agnaye idanna mama. Om somaya swaha idam somaya idanna mama. Om prajapataye swaha
इदं प्रजापतये इदन्न मम ओम इंद्राय स्वाहा इदमिंद्राय इदन्न मम 4 more oblations of ghee व्याहृति आहुतियां 4 times ओम भूरग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्न मम ओम भुवर्वायवे स्वाहा इदं वायवे इदन्न मम ओम स्वरादित्याय स्वाहा इदमादित्याय इदन्न मम ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादित्येभ्य इदन्न मम स्विष्ट कृत आहुति प्रसाद की आहुति दीजिएगा। ओम यदस्य कर्मणो अत्यरीरिचं यद्वान्यूनमिहाकरम् अग्निष्टत् सुष्टकृत विद्यात् सर्वं सृष्टं सुहुतं करोतु मे अग्नये स्विष्टकृते सुहुताहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्धयित्रे सर्वान्नाः कामान् समर्धय स्वाहा इदमग्नये स्विष्टकृते इदन्न मम एक मौन प्रजापत्य आहुति घी की ओम स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम नाउ विल ऑफर प्रातःकालीन सायंकालीन आहुति with सामग्री and घी together ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ओम ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्याजुषाणः सूर्यो वेतो स्वाहा ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ओम स्वाहा ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रेन्द्रवत्याजुषाणो अग्निर्वेतो स्वाहा ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम ओम भूर्वायवे अपानाय स्वाहा इदं वायवे अपानाय इदन्न मम ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्य इदन्न मम ओमापो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम स्वाहा ओम या मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्तेन म उक्तिं विधेम स्वाहा। अब हम कुछ विशेष आहुति देंगे जन्म दिवस की। आज डॉक्टर उषा सूद जी का जन्म दिवस है। उनके जन्म दिवस पर उनकी कल्याण के लिए, उनके मंगल के लिए हम जन्म दिवस की विशेष आहुति देंगे।
ओम उपप्रियं पनिप्नतं युवानमाहुतिवृद्धम् आगन्म बिभ्रतो नमो दीर्घमायुः किणोतु मे स्वाहा। ओम शतं जीव शरदो वर्धमानः शतं हेमन्तान् शतमु वसन्तान् शतमिन्द्राग्नि सविता बृहस्पतिः शतायुषा हविषेमं पुनर्दुः स्वाहा। ओम सम्मा सिञ्चन्तु मरुतः सम्पूषा सं बृहस्पतिः सम्मायमग्निः सिञ्चतु प्रजया च धनेन च दीर्घमायुः किणोतु मे स्वाहा। ओम सम्मा सिञ्चन्तवादित्याः सम्मा सिञ्चन्तवग्नयः इन्द्रः समस्मान् सिञ्चतु प्रजया च धनेन च दीर्घमायुः किणोतु मे स्वाहा। ओम सम्मा सिञ्चन्त वरुषः शमर्कायशयश्च ये पूषा समस्मान् सिञ्चतु प्रजया च धनेन च दीर्घमायुः किणोतु मे स्वाहा। ओम सम्मा सिञ्चन्तु पृथिवी सम्मा सिञ्चन्तु या दिशः अंतरिक्षं समस्मान् सिञ्चतु प्रजया च धनेन च दीर्घमायुः किणोतु मे स्वाहा। ओम सम्मा सिञ्चन्तु कृष्टयः सम्मा सिञ्चन्तवोषधीः सोमः समस्मा सिञ्चतु प्रजया च धनेन च दीर्घमायुः किणोतु मे स्वाहा। ओम सम्मा सिञ्चन्तु नद्यः सम्मा सिञ्चन्तु सिन्धवाः समुद्रः समस्मान् सिञ्चतु प्रजया च धनेन च दीर्घमायुः किणोतु मे स्वाहा। 3 बार गायत्री मंत्र की आहुति देंगे। उससे पहले 3 बार महामृत्युंजय मंत्र की आहुति। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। पूर्णाहुति करेंगे 3 बार। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। अब हम यज्ञ प्रार्थना करेंगे। पूजनीय प्रभो हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए वेद की बोले ऋचाएं सत्य को धारण करें हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से तरें अश्वमेधाधिक रचाएं यज्ञ पर उपकार को धर्म मर्यादा चला कर लाभ दें संसार को
नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहें। रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहें। भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की। कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से न व्यवहार हो। हाथ जोड़ झुकाए मस्तक वंदना हम कर रहे। नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे। यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए। छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। प्रभु आत्मिक बल दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे नाथ सब सुखी हो कोई न हो दुखारी। सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखें सन्मार्ग के पथिक हूँ। दुखियान कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी। दुखियान कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी। अब हम सभी श्रेष्ठ यजमानों को आशीर्वाद देंगे। जो यजमान के साथ कोई उनके अग्रज हैं वो आशीर्वचन मेरे साथ बोलेंगे। ओम सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः। ओम सफलाः सन्तु यजमानस्य कामाः। ओम पूर्णाः सन्तु यजमानस्य कामाः। ओम सौभाग्यमस्तु। ओम कल्याणमस्तु। ओम आरोग्यमस्तु। ओम शुभं भवतु। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। ओम स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विव पुनर्दधताघ्नता जानता संगमे मही। ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति।
सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आचार्य जी. Thank you for your presence this morning and leading us in such uh, very humble prayers, and your process and your pronunciation. Thank you so much. So before we start the satsang part, I want to thank everybody for joining again for Saturday mornings Vedic satsang services. I will request, first of all, Adaniya Arya ji for a bhajan presentation, please. आवाज आ रहा है? जी, thank you. तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। बरसेगा नित बरसेगा, बरसेगा नित बरसेगा। तुम करो हरियर से प्यार, अमृत बरसेगा। तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। दया धर्म से प्रीति कर लो, दया धर्म से प्रीति कर लो। भव सागर से पार उतर लो, भव सागर से पार उतर लो। तेरा हो जाए बेड़ा पार, अमृत बरसेगा। तेरा हो जाए बेड़ा पार, अमृत बरसेगा। तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। बरसेगा नित बरसेगा, बरसेगा नित बरसेगा। तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। तुम करो हरियर से प्यार, अमृत बरसेगा। सत्य ज्ञान का पहना गहना, सत्य ज्ञान का पहना गहना। कड़वा बोल कभी ना कहना, कड़वा बोल कभी ना कहना। तुम करो सभी का उद्धार, अमृत बरसेगा। तुम करो सभी का उद्धार, अमृत बरसेगा। तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। बरसेगा नित बरसेगा, बरसेगा नित बरसेगा। तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। ओम नाम का अमृत प्याला, ओम नाम का अमृत प्याला। पीले बनकर किस्मत वाला, पीले बनकर किस्मत वाला। यह मिले न बारंबार, अमृत बरसेगा। यह मिले न बारंबार, अमृत बरसेगा। तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा।
बरसेगा नित बरसेगा, बरसेगा नित बरसेगा, तुम करो प्रभु से प्यार। अमृत बरसेगा, तुम करो हरिहर से प्यार। अमृत बरसेगा, बरसेगा नित बरसेगा, बरसेगा नित बरसेगा, तुम करो प्रभु से प्यार। अमृत बरसेगा, तुम करो हरिहर से प्यार। अमृत बरसेगा। हरि ओम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रेजा जी. Such a beautiful devotional bhajan. Thank you so much for your Thank you. presentation and your Thank you. presence. धन्यवाद जी. Thank you. So I just wanted to take a moment, remind everybody that we'll be continuing our Saturday morning satsang services as we have in the past. Same Zoom link every Saturday morning, 11 a.m. Eastern. Should you be celebrating or commemorating a special event in your respected families, please let us know. We're welcome to have Acharya Ji's do special prayers for those said occasions. You're welcome to share this link with your family, friends, members of your Arya Samaj, and invite them to participate. Every Saturday, 11 a.m., we are here. So for second bhajan today, I'd like to invite Adani Vishwaji. सबको नमस्ते जी. Namaste ji. ओम सुख कंद से सच्चिदानंद से याचना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है। ओम सुख कंद से सच्चिदानंद से याचना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है। कृत कुकर्मों की जब याद आती, आंखें हैं अश्रुधारा बहाती। कृत कुकर्मों की जब याद आती, आंखें हैं अश्रुधारा बहाती। मन में संताप की घोर अनुताप की वेदना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है। ओम सुख कंद से सच्चिदानंद से याचना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है। पाया नर तन पर साधना की, कुछ भी नाईश आराधना की। पाया नर तन पर साधना की, कुछ भी नाईश आराधना की। मन में तृष्णा भरी काम मद लोभ की वासना है,
श्रेय पथ पर चलूं कामना है। ओम सुख कंद से सच्चिदानंद से याचना है। श्रेय पथ पर चलूं कामना है। श्रेय पथ पर चलूं कामना है। भक्त जन की सुनो करुण कविता, विश्व दुरितों को हे देव सविता। भक्त जन की सुनो करुण कविता, विश्व दुरितों को हे देव सविता। दूर कर दीजिए, भद्र कर दीजिए, भावना है। श्रेय पथ पर चलूं कामना है। ओम सुख कंद से सच्चिदानंद से याचना है। श्रेय पथ पर चलूं कामना है। स्वस्ति पंथा मनुचरेम भगवन, सूर्य और चंद्र के तुल्य भगवन। स्वस्ति पंथा मनुचरेम भगवन, सूर्य और चंद्र के तुल्य भगवन। दान दूं ज्ञान लूं, अघ्नता संग रहूं, प्रार्थना है। श्रेय पथ पर चलूं कामना है। ओम सुख कंद से सच्चिदानंद से याचना है। श्रेय पथ पर चलूं कामना है। श्रेय पथ पर चलूं कामना है। ले चलो सत्पथ सुपथ सर्व ज्ञाता, कुटिल अघ से बचूं सरनिवाता। ले चलो सत्य पथ सर्व ज्ञाता, कुटिल अघ से बचूं सरनिवाता। मुझको दो आत्मबल, जिससे होवे सफल साधना है। श्रेय पथ पर चलूं कामना है। श्रेय पथ पर चलूं कामना है। ओम सुख कंद से सच्चिदानंद से याचना है। श्रेय पथ पर चलूं कामना है। श्रेय पथ पर चलूं कामना है। श्रेय पथ पर चलूं कामना है। Thank you, Vishwaji, for such a melodious and devotional bhajan. I think there's a lot of comments coming. Yashi is looking for the lyrics. If you can share some time, that would be great. Do you know who wrote this bhajan, Vishwaji? You're not sure. Okay. So anyhow, thank you so much for your presence. I just wanted to let you know, Vishwaji he just came from the blood drive. The Greater Atlanta Vedic Temple is hosting a blood drive today. So if you're in the Atlanta area, I'm not sure if the registrations are full. Last time I checked, there were more than 50 people who were registered to give blood. And this is all in commemoration and our
tributes to the National Day of Service in 9/11. So thank you, Vishwaji, for the great programs. So at this time, it is time for our inspirational lecture, pravachan by none other than Acharya Varun Devji. He will be talking about. I will request Acharya Varun Devji for his pravachan today. The topic is the real Ganpati. Swagat Acharya. धन्यवाद आदरणीय भुवनेश जी, बहुत बहुत। ओ गणानां त्वा गणपतिं हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे, निधीनां त्वा निधिपतिं हवामहे, वसो मम आहमजानि गर्भदमा त्वमजासि गर्भदम्। ओम शांति शांति शांति। समुपस्थित श्रद्धेय मातृशक्ति, समादरणीय भुवनेश जी, विश्रुत जी एवं समस्त पदाधिकारीगण, सभी आर्य बंधुओं एवं आदरणीय वरिष्ठ सदस्यगण, today I am obliged to talk about this wonderful, beautiful mantra, which is from 23rd chapter of Yajurveda, 19th mantra. This mantra has a very significant feasibility in our life. Why? Because Maharshi Dayanand ji, I was just reading the references of this mantra in Maharshi Dayanand ji's writings, and I was surprised that I found this first in Satyat Prakash, not this mantra, the definition of Ganapati, Ganesh, in the first chapter of Satyat Prakash, first Samulas. Then after that, my curiosity more increased when Vishruji tells that let's talk about it and to go more deeper. Then I found it more about it in the Yajurveda Bhashya by Maharshi Dayanand ji. And then suddenly I found in Arya Bhivinay, in the Arya Bhivinay, there are mantras Swamiji has chosen from the Vedas. There are wonderful mantras he has chosen in order to aspire to the Parameshwar. So, if we want to increase devotion, if we want to be heartful in ourselves, in this time when there are so much confusions, there are so much subterfuges in our life, we have to take shelter under the light of Vedas, and especially interpretation which was given by Swami Dayanand ji. So first of all, I will go through word by word meaning of this mantra in Hindi, both first in the Yajurveda Bhashya, according to the Yajurveda Bhashya, then Bhavarth Vyakhyan of this mantra in Arya Bhivinay, and then the English translation, and then we will discuss about this mantra. We all know in this world the name Ganapati is most heard by all of us. Why? Because if you go everywhere in every temple, you will find
that people are worshipping Ganpati in the form of an idol. But first of all, let's try to understand what is the Vedic interpretation of word Ganpati. So here, the first word of this mantra is Gananam. Gananam means Ganon ke beech. This is words from Maharshi Dayanand in Yajurveda Bhashya. Gananam Ganon ke beech. Then Ganpatim, Ganon ke palan karta palane hare. Who are the Gan? We all human beings, the group of people is called Gan. In Satyarth Prakash first Sammulas, Maharshi Dayanand ji is trying to explain it very wonderfully. What he says, जो प्रकृत्यादि जड़ और सब जीव प्रख्यात पदार्थों का स्वामी व पालन करने हारा है, इससे उस ईश्वर का नाम गणेश व गणपति है. What does that mean? First, Gan means the group of people and the group of also the objects around us. That is all Gan, living creatures and even the non-living things we use in our life. The group of them is called Gan. Now, Gananam, Ganon ke beech, Ganpatim. Here, if you say we have understood the meaning of Gan, so Ganon ke beech, Ganpatim. So what is here? There are two words, Gan and Pati. So Ganon ke Pati, we know all of us the word Pati. Every day we use this word Pati, but Pati is, meaning of Pati is, one meaning is Swami, and what is the explanation of Swami? Who is Palanhar, who is taking care of us, is Pati, is our Swami. So Ganpatim, Ganon ke beech, Ganon ke palane hare, Ganpatim twa. Aapko, to you, we Hava Mahe, we accept you, we aspire you in our life, O Ganpati. Ganon ke Swami, Ganon ke Palan Karta. Then let's move to the next. Priyanam Tva. Priyanam means Ati Priya Sundaron ke beech. Priya means whatever is dear to us, whether it is a person, whether it is family, or whether it is any object in our life that is dear to us. It is referring this word to those things and people. Priyanam Ati Priya Sundaron ke beech, Priyapatim. Again, here, there he is Ganpatim, the master of all lives, the master of all objects. And here, Priyapatim, whatever is dear to us, is you are also master of them, because you have created them, because you have given birth, you have given importance to them in their existence. Priyapatim tva Hava Mahe. हे जगदीश्वर, हे गणपति, हे प्रियपति, प्रियों की, हमारे प्रियों की रक्षा करने वाले, पालन करने वाले, हे परमेश्वर, हम आपको, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी हवा महे प्रशंसा करते हैं. We are aspiring to you, O Master of all lives and nourisher and bearer of our life and dearer of our lives.
Again, now next is Nidhinam Tva Nidhipatim Hava Mahe. Now, what is the meaning of Nidhi here? Swamiji is giving विद्या आदि पदार्थों की पुष्टि करने हारों के बीच. Now this is wonderful. Nidhi, what everyone know the meaning of Nidhi. Nidhi, literally the meaning of Nidhi is treasure. And here there is Swami Dayanand Ji has expanded our consciousness in the way that we don't only think Nidhi in the form of physical treasure. He is telling that even the knowledge, thus the knowledge of the Vedas, the knowledge of the Shastras, and even the worldly knowledge and objects and even the physical treasures, he is the master of all that. So Nidhipatim, we are invoking that power, that Jagadishwar, that force, that wisdom, that omnipotent almighty consciousness to invoke in our life, to bring that presence, that divine presence in our life. What that presence can do, that presence of the Ganapati, of Priyapati, and of Nidhipati can protect our dears, can protect our lives and all the life of the Ganas, of the people who are dear to us, and all the treasures which we have in the form of knowledge, in the form of objects, in the form of prosperity, money, whatever we call Nidhi. He is the protector and bearer of all those things which we aspire, which we desire. Then Vaso Mama, Paramatman, जिस आप में सब प्राणी वसते हैं, जिस प्रकार likewise the whole the worlds and creatures, living creatures are living, taking shelter in your lap, in you. You are pervasive, you are permeating everything. So that Vaso Mama, you please take me in your shelter. We are asking the shelter of God, the shelter of Parameshwar, the shelter of Paramatma. Now let's move to the next line of this mantra. Beautiful. Aham jani garbhadama. Aham jani garbhadama garbhadam. This is also a beautiful terminology. We even in the Ishwar Stuti we say Om Hiranya Garbha Samavartatagre. So what is Hiranya Garbh? What is Garbh actually? Garbh is like when any mother is conceived. What does that mean? Garbh means dharan karna. उस बालक को मां अपने गर्भ में धारण करती है. धारण करने से गर्भ का अर्थ निकलता है. So here Parameshwar is containing, is taking all the worlds in his arms, in his power, in his wisdom, in his intelligence, in his omnipotent force and knowledge. That is, now we are indicating in this mantra, the Ishwar in indicating in this mantra, Garbh. गर्भ के समान संसार को धारण करने हारी, प्रकृति को धारण करने हारे. This whole nature is containing life energy, containing the material energy, physical energy in itself. And look
observe this whole cosmos. Look in the skies, infinite, uncountable, innumerable stars, galaxies, and the power, the energy is moving through whole cosmos. So this whole nature is containing this power, this energy in itself. And how vast must be that Ishwar who is containing this whole cosmos in his garbh, in himself. So this is the figure. If we try to understand the figure of this garbh word, we will be really moved in our heart towards that divine presence, towards that omnipotent living entity for which we are striving in our whole life. But very rarely we find a touch, the rare touch. Now, Garbhadham Tvam Aap Aja Asi. This is now we are doing स्तुति of Ishwar. How? जन्म आदि दोषों से आप ईश्वर रहित हैं. You are unborn forever. You never take birth. And he is immortal because he does not take birth. Ishwar. It is his Swaroop. Aham, arthat, this is now ourselves, Jivatma, soul, spirit. Main ajani, hey Parmeshwar, you are the garbh of this whole universe, and you are unborn and immortal. I aspire to know you, to know thou perfectly. And what is the meaning of knowing? Meaning of knowing is to experience. If you have not experienced the taste of mango, we don't have the knowledge of mango. So experience gives knowledge. Experience is the synonym of knowledge. Here, now we will move. This is the word by word. Next, it is beautiful. This mantra in Arya Bhivinay, it is called Prarthana Vishay. This is the subject of prayer in which Swami Dayanand Ji has described this mantra. We have to pray with this mantra in order to invoke that power, that force, that consciousness, supreme consciousness in our life, which will guide us, protect us, all our dears, all our treasures, all our knowledge, all our community, the community not only of human beings, the community of all living creatures which are in this ecology system, they are as important as human beings are. So in the Vyakhyan of this mantra, Maharshi Dayanand Ji beautifully aspire, this is aspiration. हे समूहाधिपते, आप मेरे सब गण अर्थात सब समूहों के पति होने से आपको गणपति नाम से ग्रहण करता हूं. You are the O Lord of the community, you are the master of all communities. Therefore, I invoke thou by the name of Ganpati. What is the beautiful meaning of Ganpati? That this is invocation. Then thou being the protector of all our dears, the dear ones who work for us, and also all the objects which are dear to us. Hence, I must know you as the Priyapati. We must know Ishwar, who is protecting the whole communities of the people, as the Ganpati. Likewise, we must know Priyapati, who is protecting our dears. Then
Thou look after and take care of all nidhis, the treasures. Therefore, I must know thou as Nidhipati, the protector and bearer of all treasures, the custodian of all treasures. O the inhabitor of all and inhabitant in all things, who is in all and everything is in him, the power, the might which Garbha has created this world, that omnipotent power, I must know thou as the sustainer and nourisher of that primordial energy. He, Ishwar, is the source, Ganapati, the supreme protector, Priyapati, protector of our dears, Nidhipati, the protector and bearer of all our treasures, the custodian, and who is the sustainer and nourisher of what? Of that primordial energy which has created this whole universe. He is the source. He is the source of power. He is the source of knowledge. He is the source of intelligence. He is the source of everything. The cause of all this is your infinite mighty strength. The same strength supports, protects, and nourishes the whole world. The animate creatures are born and die, but thou art ever unborn and immortal. By your grace, I should throw away all unrighteousness, ignorance, and wickedness in myself. Now, this is the sankalpa we are taking, that and praying to the Almighty that by your grace, आपकी कृपा से, हे जगदीश्वर, हे गणपति, प्रियपति, निधिपति, मैं अपने अंदर की सारी अंधकार, अज्ञान, अविद्या को दूर कर, दुर्भावनाओं को दूर कर, मैं आपको इन्वोक करता हूं. आई इन्वोक यू विद अ ग्रेट झील. मैं उस अनन्य साहस, अनन्य, महर्षि दयानंद जी ने एक बहुत शब्द अच्छा यहां पर यूज किया है, अत्यंत स्पर्धा करते हैं. हवा महेगा ये भी अर्थ दिया है महर्षि दयानंद जी ने, दैट वी वांट टू रियलाइज यू विथ फुल ऑफ आवर अटमोस्ट एस्पिरेशन. यहां पर वो हमारी जो तीव्रता है, इंटेंसिटी है एस्पिरेशन की, वो शो हो रही है. दैट इज बीइंग शोन हियर. बी एक्सेसिबल टू अस, ओ लॉर्ड सुप्रीम. इफ यू विल delay even the least in this matter, we shall be ruined. So, in fact, the correct way of praying to the Ganpati is we invoke that almighty consciousness, supreme consciousness in ourselves, which will not only protect and guide us, but also show us the right way in our life, what we should do and what we should not, because he is Ganapati. With a small story I want to conclude that shows if we have faith, if we have devotion, then nothing can happen to us. Like faith in Maharshi Dayanand, that is our example. Once one husband and wife were going on a boat. They were crossing over a river, and suddenly storm came, and wife became very anxious and very fearful. But her husband was very quiet, so calm, not disturbed at all. Then suddenly
His wife asked, what happened to you? Why you are not fearing we are going to die in few seconds and our boat is going to sink down? Why are you not being fearful? What did he do? He had a knife. He put that knife on her throat and said, tell me, are you fearful now? Are you having any fear? She said, no, you are my husband. You are dear to me. How can I be afraid of you? So he said, I believe in my God that whatever will happen to me will be the best. So why should I fear? I know he is protecting me. He is protecting all the time. He's all the time with me. Why should I be fearful? So this is a small example which shows the utmost faith in the presence of God, of Parmeshwar, Almighty Parmeshwar, who can make us get rid of all kinds of fears, all kinds of ignorance, and lead our life in the direction of light, knowledge, freedom, and perfection and delight. So the true meaning of Ganpati is when we invoke sincerely in our heart, we aspire in our heart to that omnipotent and omniscient Supreme Parmeshwar, who is the master of all and who is the source of all life. Om Shanti, Shanti, Shanti. Thank you, Acharya, for such, what I'd say, stream of knowledge on this topic. There is a lot of misconception, and there's a big misconception about Arya Samaj, that Arya Samaj does not believe in Lord Ganesha. You have truly explained that it is not the physical, all these ceremonies that go on around this time of the year, but it is invoking the Ishwar. The real bhakti is understanding that Ganesh Lord is a there's no form. It is he is ever pervading all, and just like the principle of Arya Samaj, right? So there's a lot of misconception, and so thank you for clearing that up. But one word that you mentioned that comes very early on in the mantra is the what you talked about, the nidhi, right? And I want to focus on that, and that's a personal takeaway. A lot of times we talk about what we receive from Ishwar, what we should be thankful for. And we talk about people gaining the physical treasures in this life, right? Whether it be wealth, whether it be statuses in society. But the Ved mantra that you explain and the translation from Maharishi Dhyana, I think is very relevant, that the treasure that we must seek is that internal light, the internal knowledge of Vedas, right? That is the real treasure, and that's what helps us transform our lives. So thank you for bringing that up. Exactly. Again, we hope we'll have you back again in future programs. So just a quick announcement, we will continue our Rig Veda Bhashya Bhumika classes every Wednesday, led by Acharya Ankit Prabhakarji. And as I put in the WhatsApp, we are looking to continue our daily programming as well as soon as all the logistics are figured out. But this every Saturday, we are here for Agnihotra and Satsang and Pravachan, 11 a.m. Eastern Standard Time, USA time. Thank you all for joining. I'll request Acharya to conclude the session with Shanti Path and Jai Ghosh. Sure. O Shanti Path. Om Dyahu Shantirantariksam Shantihi Prithvi Shantirapah Shantiroshadhayah Shantihi Vanaspatayah Shantirvishve Devah Shanti Brahma Shanti Sarvam Shantihi Shantireva Shantihi Sama Shantiredhi.
ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय। गुरुवर विरजानंद जी की जय जय युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद जी की जय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जय योगेश्वर श्री कृष्ण जी की जय। जय सभी संतों महात्मा और ऋषियों की जय। जय आर्य समाज अमर रहे। वेद की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहेगा ऋणवंतो विश्व मार्य। विश्वमार्य। वैदिक ध्वनि ओम। वैदिक अभिवादन, सबको सादर नमस्ते। नमस्ते।